prereq to get started with the Google Cloud Platform is to intro of the cloud computing. The introduction to cloud computing is very essential. If I just get started with the cloud essential, it might be take a lot of time, so that you can go to the internet or YouTube, you can research for the introduction to cloud computing, where you will get started with what is cloud, about the public cloud, about the hybrid cloud, and the models of the cloud, which include infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. And now we have more types, which include fast, like the serverless, and the function as a service, or we also include the DAS, the database as a service. So you can get all the information from the YouTube. Other than these topics, I'm going to give you the brief information about the Google Cloud. What is Google Cloud? Why cloud is essential for us, and what are the services on the Google Cloud which are essential to get started. So today agenda is we will talk about the computing. Computing is about the virtual machines. You most of guys you have already idea about the what is virtual machine. But if you don't know what is virtual machine, we can get started with it. Then networking. Networking is very essential. It's about the connecting of the applications, not through the public, but the like interconnection where the the from the internet the from the internet traffic will not access your application. We will learn about it. And then about the storage is about the storing the things. It's about the storing the object files, the storing the databases, NoSQL files. We will talk about it. Then there's a big data. Big data is like warehouses. You have like terabyte and petabyte of data. How you can just store them. There are some services on Google Cloud. I will go with it. Actually, I work a lot with AWS, so maybe if I just speak something about AWS, please ignore it. Google Cloud, like you will find a lot, very less people, and we are trying our best to have more certified in the industry, because this cloud is very efficient and very easy to use. Then we will talk about the administration is about identity access and management, IAM, and about your security, how much access you will provide your applications, like roles, and how much you provide access to your users like me, who can access the project which is on Google Cloud. So how much you can provide access to this person. So I will provide the very low access to the person. Like for example, if a person is from the database team, so I will not give him the access, administration access. I will provide him the access only which is needed. Like if he need access to the database like MySQL, then I will provide him access for the MySQL, no for the NoSQL. So this is about the identity access and management. You can just learn more about it on the um, YouTube. YouTube is, is a free platform. There's a lot of information on the YouTube is for free. You can go for it. But the purpose of this event is to get you all started with the cloud. It's just like a giving you a kick to get started. Then we will talk a little bit about the machine learning, how cloud is so much essential for the machine learning. As you all see that there's a chat GPTs now, but behind the chat GPT, what is it? Is this is the cloud. Like if there is no cloud, like there's on-prem cloud, but let's take an example. If there's no public cloud, it's really hard for the chat GPT and OpenAI to scale in the mega. Like they just their machines in seconds. This is because of the public cloud. And for the chat GPT, they are using Azure. This is just for your knowledge purpose. So yeah, we are good. So so before we just get started, I would like to introduce myself. So my name is Adil, and I'm working as a DevOps engineer at SSI, and with multi-cloud. So multi-cloud, which include Azure, AWS, and Google Cloud. So the two of the clouds. So this is just beginning, like how what is the UI of the GCP, the Google Cloud Platform. So if you can see that on your left side, you can see your all app from where you can
access your services, like the services like compute engine. If you are going to access your API, from where you can access your APIs, and also you can just pin them so you can easily access them from your left corner. And also if you can see here, you have your project name, and all the projects have their own services. So if like I am working on the two projects, then I can create this two projects. So all of the projects have their own services, and they are isolated with each other, and they can connect with the networking part, which is actually the VNet, with the virtual. So let's talk about computing, why it is so essential. As I was giving you the example of the chat GPT, the open AI, like if you just go to the chat, like if you don't have idea about the chat GPT, just Google it. It's the new AI in the market, which can help you with a lot of things. Like if I'm working with the cloud, if I am going to start with the cloud, it just gives me the best research index from all over the globe, and it just give me all the information related to it. Actually, this is not the class about the chat GPT, so I'm not going to give you the all information about it, but you can just Google it. So the behind the chat GPT, there are computings. They have the ability to scale themselves. So like let's talk about how many types of computing we have. The one is the virtual machines. The virtual machines have like their computing power, they have the operating systems, and you can create multiple virtual machines. You can also create the virtual machines group, from where you can easily scale them if you have a lot of traffic, which means that cloud is have elasticity. It can be scaled when you need more, and when you don't need them, it just cool down and it just become to his desired state. You can give him that this is your min state and this is your maximum state. So this is how you add the values in the coding. So min and max state, that's an easy for you. And the containers are isolated with each other. If you have the example about the Docker you see in the market. So Docker have the containers. You create container for the database, you for your front end, you create container with the back end, and then with the help of network, you connect them with each other through the port forwarding, and then they are isolated with each other. They just have their own memory, they just have their own CPU, and they have ability to, when failure, they can restart, and they just have a lot of features. So this is what containers is. So Google Cloud also have the ability and also support the Docker containers. Then there's a serverless, which I was talking about. The function has a services. The function has a services mean that you only focus on your code. You just need to be focused on your code. Your code is running on the computer, but you don't need to be patch your machines. You don't need to be upgrade your machines. You do not need to be think about the security ports, firewalls, and all of these stuffs. You just focus on your code. All of other stuffs, like your vendors will take care of it. You just focus on your code. This is like triggering a specific task. Let's take an example. For example, if you are in the company and you need to send an email to your employees at the specific time, like at 7 p.m., and how you can just do it like just create a spin up a new virtual machine? No, that's a bad idea. It just costs you a lot. The good idea is to create a Google function which is serverless. You just add the Python or whatever the language you learn or you have idea. It is easy to get started with. Like as for me, Python is the best. So I just write a Python code with the help of ChatGPT, and then add my code to the Google functions, and then give the Google functions to trigger the task at 7 p.m. So it will daily cron job with the help of cron job. In the easy words, it will just trigger the task at the specific time, and it just save your money. And whenever you don't need to pay. And when like it just trigger one at the time, so it will cost you like pennies, and in the month it will just cost you $1. And if you just spin up the virtual machine, it can cost you like 200 or 300, depends on the region, or depend on the
on the machine family. Like if I just spin up the 4 GB or 16 GB, and the price vary, and prices also vary with the regions you are going to spin. So this is about, you also need to be more focused on the cost optimization, about the cost. There are calculators like for the AWS, Google, and Azure. They have the calculators. So before you spin the machine, like I just going to create a machine, you just need to be know that it will cost you a lot of money, might be. And then before you doing that, just open the calculator and look for it, what kind of service, in which region it cost, and it just give you all the details. So we were talking about the serverless. So this is the example from where I can easily get the idea what is serverless. You don't need to be worried about the like the backend. You just focus on your code. Once if you have issues with the code, it will not trigger it. So if the code is good, it will trigger the task at the specific time and all good. So a lot of websites are now moving to the serverless, but there are pros and there are cons. Like there are some positive side and there are some negative side. But as far I have working experience, I see that serverless applications doesn't, like they have the scalability, but it's really hard to monitor them. We will see how Google Cloud is supporting the monitoring purpose, but the serverless applications are really hard to monitor. So so let's talk about more about the virtual machines. The virtual machines have like these kind of specs right now spot on the Google Cloud, and they can be changed. And like they can be changed, not like tomorrow, but like in the next year or maybe in the next 2 years, you will see the cloud will be upgraded. You will see a lot of changes in the cloud. So when there are changing, so this means that there's a lot of job opportunities, lot of learning in the cloud. So if you are planning to get into the cloud, then don't wear, just jump into the cloud, I will suggest you. And you can see a lot of information there. And you can just create the multiple machines. You can create the Red Hat machine, you can create the Windows machine, Ubuntu machine, and you can just spin up to the 65 terabyte of persistent volume. That's a lot, but be careful, it will cost spin a 65 terabyte machine. It's just for the knowledge purpose. And there are some cloud launchers. So what are the cloud launchers? Easily create the cloud launchers from the Google Cloud platform. And the purpose of the cloud platform is to like not do the task specifically. Like if you are going to create a machine on the regular basic, like I am going to create a machine, I'm going to create a Ubuntu machine on daily, and it's my task. So I can automate it with the help of cloud launcher. I will give him the specifications like this is the cloud image. Cloud image means that Ubuntu machine. In our case, maybe in your case it will be Windows. Then you will give him the specification. It will be like 4 GB, and it have the internal storage of 16 GB persistent storage. And then you just give details and then submit, and it can be triggered in the specific time with the help of cron job. Other than that, you can just trigger it manually, and it will create that specific machines on in daily, or whatever you just doing, like whatever cron job you just provide, it will do the job. The purpose of uh the launch, the templates, the launching templates, they on some clouds like AWS, you has templates, the EC2 templates. And on Google Cloud, they said, uh, as I have already idea about the multi-cloud, so I will add only there's a specific change in the name. Like if I say virtual machine, then the networking, the IPs, persistent volumes behind the virtual machines are same. Just there's a naming conventions on all the clouds. So if you clear your basics, the basic concepts, like how to get started with the cloud, what are the cloud models, deployment models, how cloud works, then you can easily do your job on the multi-cloud. And also you can automate your infrastructure through Terraform. Terraform may be a new word to someone, but you can just Google for it, and thanks me later.
So containers, as I said, they are isolated with each other, and you can create containers, and you can install the Jenkins or other applications, and it's very easy to use. You just need to pull the image from the registry and then give him the container a specification like this. You run on a 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, depends, and then you will tell him to deploy it in a specific region, like in our case US East 1 or US East, whatever is suitable to you and cost you less. You can deploy your container to it. So a lot of in 2023, most of you already hear the word about the Kubernetes. I said Kubernetes. Like, what is Kubernetes? So it sound funny. Kubernetes. What is Kubernetes actually? Of you guys have idea about the Kubernetes, or you don't totally idea about the Kubernetes? So if you are into the cloud or about the container orchestration, if you already have the Docker, so what's next in the containerization? It's the Kubernetes. So can you just drop a message in the chat that how many of you guys have idea about the Kubernetes? Like, or what Kubernetes? The words sound good to you, Arivan or Abdul Mateen? Mm, no idea. So I just take this as a no. Mhm. No idea. Oops. Yeah. So I will give you the details about it. So yeah, I didn't have idea about it. It's good to see the people have idea about it. So if you already know what is containerization or about the engine, which is actually Docker, and also support the Docker Swarm, which actually is a content orchestration platform, which means that it can scale, it can just manage your containers. But for the Kubernetes, it's very it's like associate level thing. Like for the beginners, Docker is good. They learn about the containers, they learn about the system D, how to run the Docker container, and then the Docker networking. Then the Kubernetes is a next level thing for you guys. Like, you just have a node, a master, a control plane, and like most of you guys maybe idea about the Minikube or the Cube ADM control plane, or on the public cloud they have their own self-managed control planes. As I can say, for the AWS case is EKS, Elastic Kubernetes Service. For the Azure case is AK. For the Google is one of the best is JKE, Google Kubernetes Engine. And they just manage your control plane, and the control plane have their nodes. Nodes are like machines, the machine virtual machines. If I say node, it's mean compute, the virtual machine. And the compute have installed all the configuration of the Kubernetes, and the control plane manage your nodes, and nodes have your, or like nodes have etcd APIs and monitoring all of this stuff. And nodes manage your deployment pods and service, and pods have your containers, and containers have the nginx containers, and all of these containers are running. This is what I can easily say about Kubernetes, as this is very hard to learn about the Kubernetes. But uh, like every impossible thing can be possible, so you just need to spend time, practice, and that only can a person can do. And this is how the Kubernetes design works. So Kubernetes have ability to scale the current pods when there's a high traffic, horizontal scaling, there it is, HA proxy. And then they have ability to store the files. You can cron job the files, you can just add the jobs, you can also store the configuration secrets to it. And there's a lot of information about the Kubernetes. The best one I recommend to people is God Cloud. If you are interested to learn about about the Kubernetes, just you need to, there's a little amount to pay, and
Code Cloud have one of the best tracks about the Kubernetes, and they can make you the professional in Kubernetes by certifications in CK, CKD, and CKS. But they are little expensive. But if you can do them, uh, you will have a lot of opportunities in the market. And now you can see a lot of the projects are now shifting to the Kubernetes, so it's a good time to learn the Kubernetes. So the purpose of this to give you the information what is Kubernetes and how it's work. So from Google Cloud, you can in the upcoming sessions. So we will spin up the Kubernetes engines, and we will give you how to run a WordPress or install Nginx. These are the beginners level. We will do the proper projects on the GKE Google Kubernetes engine. Or if you don't have access to the cloud, what will be the solution to learn the Kubernetes? Might be have a question in your mind. Then you can just spin up a machine, if you are using Windows, then you can just have create a virtual machine along with your Windows. And on the Linux machine, you can just spin up a mini cube or the cube ADM, and through which you can just learn the Kubernetes. Or if you have access to the Google Cloud or any other cloud platform, you can easily create a cluster from where you can just get started with the Kubernetes. But I would recommend to get started with the Minikube, because when you just on the public cloud, you just missed a lot of the information. Like the cloud public cloud is very easy, and when you have the hands-on experience on the Minikube or cube ADM, you learn about the networking, you learn how the pod and deployments are work, how nodes are working, how to troubleshoot the logs. And you also spend a lot of time on the configuration. So when you just then you just jump to the public cloud like Google Cloud, then you just have the idea how this is all working. You will also know that how behind the networking is working on the control planes. So that was just for the information part. The purpose of this event is to help you to get started with the cloud, but also give you the best information as soon as we can. So the containers on the Google Cloud are container engine, and it support the Kubernetes and also support the monitoring, logs, DNS, and the service discovery. And it's also have ability to auto scale the container engine. Now you have the idea what is Kubernetes. So this word is not new to you now, and you also have idea how what are the purpose of the monitoring. Is it to find the logs, find the issues, the root cause of the application at the system level, so you can easily see them through monitoring. And as I already told you about the auto scaling, this is very essential. Like in that case, in some days you have a lot of traffic on your website, so it's an ability to auto scale it. So container engine is the containerized application of Google Cloud. So as I you see, when I was giving you the example, I just said registry. Registry means where you store your image. Images are like they just have all the details of your application. Like open this port, just install the Python and this software, and they just compile the detail and store it to the image. For that case, we use container registry on Google Cloud. And you can easily, once you just creating the container region, you can just give him that my image is on container registry, so it will just pick the container registry from your platform. And that when it's just spinning up your app engine container, it will install all of the dependencies and all of the configurations requirements on your container.
Serverless includes the cloud function, which I already give you an example about it. That the functions are they just use for a single purpose. Like if I need to send an email to my employees at the specific time, then I can do this job with the cloud function. So there's a lot of things can be done through cloud function. As I give you the example that you can create a mini project or a website in cloud in serverless cloud with the help of cloud functions. And they are event driven triggers. Event drivens, like the you will learn about the pops up, they are like in the queue, like one task. So like sometimes when there's a lot of cloud function queries, like 2000 or 3000 hits, it cloud function sometime just give you the an error, like it just like the limit increase, threshold limit increased. So from where you can just use the event trigger. The event driven trigger means that you can just add the queue, and it will just go in the first in first out, like FIFO. FIFO, you already maybe have idea about this concept in your coding when you were learning C++ or Python, about the stack like leaf or FIFA, where we use the event driven triggers, and they use this concept. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेटवर्क। पर्पस ये होता है कि वो आपकी एप्लीकेशंस की कनेक्टिविटी करवाता है, इंटर कनेक्टिविटी। द मिसाल के तौर पे आपकी एप्लीकेशन है, वो थ्रू आउट पब्लिक कनेक्शन से पब्लिक से यूज़र आ रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी जो है ना वो इनर लाइन इंटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि कोई इसको बंदा इंटरनेट से एक्सेस ना कर सके। और सिक्योरिटी लूप होल्स होते हैं जिससे जो हैकर्स हैं वो आपकी वेबसाइट्स को एक्सेस कर लेते हैं। एक स्पेसिफिक पोर्ट आपके ओपन रह जाती है इंटरनेट पे 0.0.0.0 पे, जिससे क्या होता है कि वो एन मैप करके या वो टेलनेट करके या डिग करके सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है आपके एप्लीकेशन की, कि कौन सी स्पेसिफिक पोर्ट ओपन है, SSH 22 ओपन है, कौन सी ओपन है, डिपेंड करता है। और उस पोर्ट से वो आपको जो है ना है आपके सिस्टम में आ जाता है। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ये इश्यूज होते हैं। तो उस वजह से जो है ना यहाँ इनर कनेक्टिविटीज के जो है ना रूल्स फॉलो किए जाते हैं, कि सारी जो ट्रैफिक है वो आपके VPC से होके गुजरती है। VPC मीन्स वर्चुअल नेटवर्किंग। ठीक है, उसमें वो देखता है कि कौन से पोर्ट पे कौन से IP से कौन से पोर्ट पे ट्रैफिक जा रही है, और कौन से जियोग्राफिकल रीजन से आ रही है। तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, उस ट्रैफिक को पास भी कर सकते हैं। इन इंग्रेस और इंग्रेस के आपको मे बी रूल सेट का आइडिया हो कि नहीं। इंग्रेस मीन इनबाउंड ट्रैफिक, और इंग्रेस मीन ईव मीन्स इग्रेस मीन के जो आपकी आउटबाउंड ट्रैफिक आ रही है, और आउटबाउंड जो ट्रैफिक आपके सिस्टम से निकल रही है। सिस्टम से जो ट्रैफिक निकलती है वो ऑल की होती है, लेकिन जो उसके ऊपर हमें ज़्यादा जो है ना वो कंट्रोल करना पड़ता है, उसके ऊपर हमें बताना पड़ता है किस IP पे से आ रही है, किस पोर्ट पे ट्रैफिक जाएगी, फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट। ठीक है, फिर आप उसके अलावा जो है ना बाकी जो भी होंगे वो आपके रूल्स ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब कि अगर मैं बताता हूँ कि मेरी ट्रैफिक 80 पोर्ट, 80 मीन्स HTTP या HTTPS 443 पोर्ट पे ही ट्रैफिक है, तो अगर कोई बंदा उसके अलावा एक्सेस करेगा, लाइक 22 और 80 के अलावा, 8443 और 20 के अलावा अगर कोई बंदा 22 से एक्सेस करेगा, तो वो ब्लॉक है, वो नहीं एक्सेस कर सकता मेरी किसी भी एप्लीकेशन को। ठीक है, so that this is what the purpose of the networking. स्टोरेज, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द स्टोरेज। स्टोरेज का जो है वो क्या पर्पस है। तो स्टोरेज हमारे पास जो है ना वो तीन टाइप्स की है। वी हैव फाइल्स, जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, जो यूजर्स के डॉक्यूमेंट की फाइल्स होती हैं, उनका जो PDF फाइल्स होती है वो सारी जो है फाइल्स में स्टोर होती है। कुछ होती है नो सीक्वल, जेसोन के अंदर जो आपका जो नो सीक्वल होता है, या जो रिलेशनल टेबल्स के अंदर फॉर्म में रिलेशनल डेटाबेस, वो आपके डेटाबेसेस स्टोरेज होती है। बिग डेटा आपका पेटाबाइट ऑफ स्टोरेज होता है। ठीक है, उसके लिए भी जो है ना गूगल क्लाउड के पास सर्विसेज हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इफ़ यू कैन सी द दिस डायग्राम, तो आपको अभी तक जो हमने सारा देखा उसका आइडिया हो जाएगा कि वी हैव APIs। APIs को हम APIs हमारे पास, जैसे अगर मैंने कोई भी स्पेसिफिक सर्विस, जैसे मैंने कंटेनर इंजन यूज़ करना है, तो गूगल क्लाउड मुझे अलाउ करता है कि मैं उसके API को इनेबल कर सकता हूँ। उस करके उसके ऊपर क्रेडेंशियल भी लगा सकता हूँ। क्रेडेंशियल्स के बाद मैं उसको जब एक्सेस करूँगा, तो उससे मैं कोई भी स्पेसिफिक काम जो है वो ट्रिगर करा सकता हूँ थ्रू APIs। तो गूगल क्लाउड के अंदर ये फीचर्स है कि आप API के थ्रू भी गूगल क्लाउड को मैनेज कर सकते हैं, उसको सिक्योर वे से भी आप मैनेज कर सकते हैं। एंड द पब सब इज़ इवेंट ड्रिवंस, जो आपकी क्यू सर्विसेज के लिए यूज़ किए जाते हैं।
आपने जब यहाँ से एपीआई से हिट किया, आपके यहाँ क्लाउड पब के पास जाएगा, एंड दिस इज द क्यू सर्विस विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड देन इट विल लुक फॉर द सर्विस यू ट्रिगर, देन इट विल जस्ट गो फॉर द ऐप इंजन, और स्पेसिफिक काम जो है ना वो उस इंजन के ऊपर परफॉर्म कर देगा। तो दिस इज व्हाट सारी चीज़ों के लिए जो चीज़ जो फॉलो की जा रही है। यार एपीआईज आर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, और वो आप उनको एपीआईज के ऊपर जो है ना वो डेटा आपका चेंज होता रहता है, वो आपका कंसिस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप वेबसाइट के ऊपर अगर आप कोई आप वेब डेवलपर्स हैं, तो अगर आपने फ्रीक्वेंटली जो आपकी डेटा में चेंज हो रहा है, तो आप उसके बैकएंड पे एपीआईज जो है ना वो क्रिएट करते हैं। एपीआईज में जब आप चेंज करते हैं, तो जहाँ-जहाँ आपकी एपीआई यूज़ हो रही है, तो वहाँ जहाँ जाके आपका डेटा अपडेट कर देता है, ठीक है? सेम वही चीज़ जो है ना, वो प्रोटोकॉल जो है ना, फॉलो क्लाउड पे भी होते हैं। जब आप एप्लीकेशन एपीआई को जब आप हिट करते हैं, तो वो आपकी जो चेंजिंग्स होती हैं, वो एपीआईज़ उन चेंजिंग्स को जेसन की फॉर्म में लेके जाता है, और उसको आपके उस स्पेसिफिक सर्विस के ऊपर अपडेट कर देता है। अगर आप एक स्पेसिफिक सर्विस को डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक एपीआई कॉल होती है, और वो आपका जो है ना, एक चीज़ को ना, एक स्पेसिफिक टास्क परफ़ॉर्म कर देती है। अगर आपने एपीएस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, तो अगर आपके पास गिटहब अकाउंट है, या आपके पास गूगल क्लाउड का अकाउंट है, तो आपको जो है वो क्या नाम है, गिटहब के जो है एपीएस वो ओपन है, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, और उससे आप कोई भी जो है ना अपना स्पेसिफिक टास्क जो है ना वो परफ़ॉर्म करवा सकते हैं एपीएस, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं उसमें। अगर आपने एक नई रिपॉज़िटरी ऐड की है, तो एपीआई के पास कोई, और वो आपकी न्यू रिपॉजिटरी अपने पास ऐड कर लेगा जेसन की फॉर्म में, और आप उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो इट्स लाइक अपडेटिंग योर टास्क मोस्ट फ्रीक्वेंटली, वहाँ आपकी एपीआईज़ कॉल होती हैं और वो यूज़ की जाती हैं। ओके, सो रजिस्ट्री, असल में रजिस्ट्री का जो पर्पस भी होता है कि वो आपकी इमेज को स्टोर करता है। इमेज इज़ लाइक द इमेज आपका जो होता है ना वो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अगर डॉकर, अब डॉकर पे जाता हूँ। प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही, लेट एक मिनट में स्टॉप करके दोबारा आपको शो करता हूँ। तो आपको प्रेजेंटेशन शो हो रही है? Shiraz, can you see my screen now? It's visible. या सो अच्छा, अभी मेरे से किसी ने सवाल पूछा था अबाउट द रजिस्ट्री, रजिस्ट्री क्या है? अच्छा, आई एम जस्ट टेकिंग दिस हैज एन एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे है, और सेम यही कॉन्सेप्ट जो है ना वो सारे क्लाउड पे होता है। और आप ये ख्याल रखते हैं कि जैसे आप पब्लिक क्लाउड पर रजिस्ट्री क्रिएट करोगे ना, उसके बाद हर स्टोर वो कॉस्ट होती है, ठीक है? तो उसका आप ख्याल रखना। अच्छा, so if you can see that कि यहाँ मैंने अभी एक एल्पाइन, एल्पाइन एक्चुअली बहुत लाइटेबल जो है ना एक इंजन है जो आपका यूज़ किया जाता है मोस्टली। ठीक है, एल्पाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास देखेंगे इस लेयर्स हैं, अगर आप देखेंगे आप कमांड चला रहे हैं, आपने लेबल लगाया है, आपने इन्वायरमेंट सेट किए हैं, ठीक है? ये सारा आप एक डॉकर फाइल में ऐड करते हैं, ठीक है? वो डॉकर फाइल में भी आपको दिखा देता हूँ एज एन एग्जांपल। तो वो डॉकर फाइल में ना सारी वो चीज़ें जो है ना वो आप कॉपी करवा रहे हैं फाइल्स को, एंट्री पॉइंट्स आपने ऐड किए, और एंड पे आपने बता दिया कि मेरे पास ये पोर्ट के ऊपर एक्सपोज कर दो। सही है, ये सारी चीज़ें आप ऐड करते हैं एक डॉकर फाइल के अंदर, ठीक है? और फिर आप करते हैं डॉकर को बिल्ड, बिल्ड करके ना आपके पास ना एक इमेज रेडी होती है।
उस इमेज के अंदर ना वो सारी लेयर्स होती हैं कि जी भाई पहले मैंने ये पाइथन की एक इमेज ली वहाँ से, लाइक पाइथन 3.9, उसको पुल किया। उसके बाद मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक मेरी डायरेक्टरी है, इसमें चले जाओ। उसमें उसके बाद सब कुछ करने के बाद मैंने उसको बता दिया कि मेरी ये 80 पोर्ट जो कि एचटीटीपी की पोर्ट है, इसके ऊपर एक्सपोज हो जाओ। तो जो कंटेनर आईपी होगा ना, उसको मैं जब हिट करूँगा एचटीटीपी के साथ, तो वो मेरे पास ये एनजिनिक्स का जो है ना एल्पाइन सर्वर वो चला देगा। ठीक है? ये कंटेनर रजिस्ट्री आपको ना उस इमेज को स्टोर करता है एक टैग के साथ। उस रजिस्ट्री से आप हर दफ़ा ना आप जब भी चेंज करते हैं उसमें ना आप नई इमेज क्रिएट करते हैं। मैंने उसके बाद ना मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि भाई इसको 18 या 443 के ऊपर ओपन करो। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपोज़ 80 443, ठीक है? उसके ऊपर एक्सपोज़ करके नई इमेज बिल्ड करके पुश कर दूँगा अपनी रजिस्ट्री पे। रजिस्ट्री ने क्या किया, वहाँ एक टैग लग गया, तो मेरे वहाँ से ऐप इंजन ने क्या किया कि नया टैग देखा कि ऐड हुआ है, उसने उसको पिक किया, उसने चेंजिंग्स जो है ना वो मेरी अपडेट कर दी। सही है? अब आइडिया हो गया आपको कि व्हाट इज़ रजिस्ट्री? अच्छा, हम बात कर रहे थे, एक्चुअली वी वर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशंस, जिसके अंदर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, आपके यूज़र एंड आपके यूज़र की एक्सेस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी के थ्रू ही जो है ना वो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसी पे डिपेंड होती है, उसकी कंप्लायंस जो है ना वो उसी चीज़ पे डिपेंड होती है। अगर आप लेट्स हैज़ एन एग्ज़ाम्पल कि आप एक बंदे को पूरी एक्सेस दे देते हो ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो क्या करेगा वो, कोई चीज़ को रिमूव करेगा, एक्सीडेंटली भी अगर उसने कर दिया है, तो उससे सारी सकता है। तो इस वजह से जो है ना, कोशिश यही है कि आप यूज़र्स को जो है ना कम एक्सेस प्रोवाइड करें। ठीक है। हमारे पास रिपोर्टिंग के हवाले से जो है एक सर्विस है गूगल क्लाउड की, वो स्टैक ड्राइवर के नाम से है, जिसके अंदर आपको सारे जो है ना लॉगिंग्स डिटेल, इवन सिर्फ गूगल क्लाउड की नहीं, इफ़ यू आर यूजिंग द एडब्ल्यूएस क्लाउड, तो उसका भी आप सर्विसेज के लॉग्स जो है ना वो आप गूगल क्लाउड पे लेके आ सकते हैं। लाइक यू कैन आल्सो एक्सेस योर ऑन प्रेम और योर एपीआईज़ के जो लॉग्स होते हैं, वो भी आप स्टैक ड्राइवर के थ्रू जो है ना वो लॉग दिखा सकते हैं। ठीक है, अदर देन दिस आपके पास डेटा स्टूडियो है। डेटा स्टूडियो आपको अलाउ करता है कि आप एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, जिस पे अपनी पूरी एप्लीकेशन के ऊपर क्या कितने यूज़र्स आए, क्या डाउन टाइम था, ट्रैफ़िक आपकी कहाँ-कहाँ से आई, कौन-कौन सी डिवाइस ने उसको एक्सेस किया। तो आप वो सारे उस बना सकते हैं डेटा स्टूडियो में। तो अगर आपके पास एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे नज़र आ रहा हो, तो गूगल एडवर्ड भी जो है ना वो डेटा स्टूडियो को ही यूज़ करता है। जितनी भी आप देखते हैं अपनी एडवर्ड्स के हवाले से कि कितनी कैम्पेन्स आपकी हिट हुई हैं, कौन-कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफ़िक आई है, तो वो बिहाइंड दिस वो आपका डेटा स्टूडियो ही यूज़ हो रहा है, जो कि क्लाउड की सर्विस है। ठीक है? तो काफ़ी लोग जो है ना वो कर रहे थे, उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। बिहाइंड दिस के वो डेटा स्टूडियो यूज़ हो रहा है, तो उसको ही सीखा जाए, ताकि जो चीज़ जिस पे क्रिएट हुई है उसी से एक नई चीज़ क्रिएट कर ली जाए। तो अगर आप देखेंगे तो वो सारा बता रहा है कि कौन-कौन सी डिवाइस से आपको चीज़ें हिट हुई। एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इस मतलब ये था कि डेटा स्टूडियो आपको कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और एक वर्चुअलाइज़्ड वे में, जो आपको आपके लिए बड़ा एक ईज़ी वे है। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए क्लाउड आईएएम है, जो मैंने आपको बताया था कि लोगों को एक स्पेसिफिक एक्सेस दी जाए, और सिर्फ़ उनको जो है ना एक फाइन ग्रेड कंट्रोल दिया जाए। अगर एक बंदे को सिर्फ़ एक बकेट को एक्सेस करना है उसने, तो उसको सिर्फ़ एक बकेट की ही स्पेसिफिक एक्सेस दी जाए। ठीक है? और बाकी आप गूगल क्लाउड को जो है थ्रू सीएलआई भी मैनेज कर सकते हैं। अभी एपीएस का मेरे से किसी ने पूछा था कि जी व्हाट आर एपीएस? तो मैंने उसको ये बताया था कि अगर मिसाल के तौर पे मैं गूगल सीएलआई के तो वहाँ एपीएस कॉल होती है, और एपीएस ही जाके डेटा जो है ना गूगल क्लाउड पे अपडेट करती हैं। और एपीएस के इसके अलावा जो है ना मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा को अपडेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है? इसके अलावा आपकी काफ़ी